Hello, good morning, good morning, good morning, good morning, very good morning. Bande Mataram, Bande Mataram, not garam garam, not garam garam. Yes, it is also a garam garam, very hot and hot. But Chinese soup nahi hai, it is not Chinese soup. It is not only chicken, you have green mirchi, then sauce. It's very tasty evening time. But if you go to South Korea, they will give you kacha chicken, all kacha chicken, raw chicken, very raw chicken. But if you go to North Korea, I don't know at all. I had been to South Korea. 7 days only fruit, no raw chicken. Friends, today early morning I have come to bathroom. Bathroom is a very nice place, very nice place. शांति needs शांति. आपको सच बोलने का मौका मिलती है, सच बोलने की मौका मिलती है। बहुत सच, जो सच मंदिर पे नहीं बोल पाते हो, मस्जिद पे नहीं बोल पाते हो, गिरजा पे नहीं बोल पाते हो, कहीं भी नहीं बोल पाते हो। फ्रेंड्स, my Facebook account is totally partially blocked. 2 accounts. I don't know why. There is a restriction. I have written to government of India. I have written to Facebook. Why? What mistake I have done? Facebook, Mark Zuckerberg. Why you are blocking? Why you are not able to publish some videos? Can you give me answer? Look here, I am not here to work for Facebook on your own choice. Let me again tell you, Mark, I have questioned you when in India there is a turbulence of hijab, whether hijab should be applied in the academic institute or not. I have made my points very clear whether hijab should be allowed or not. Second point, I have tried to block and raised my voice against many anti-India slogan and anti-individual kind of abuse to Prime Minister. I'm not naming. If I have to name Jyotishina, 850,000 user, I have blocked. Again, you have reopened their account, but you are putting me under kind of a stressed condition, not blocking me, allowing me to publish halka thing, but not allowing me to publish anything related to war, what is happening in Russia and Ukraine. I have published many videos. I've been publishing many poetries, my poetries. I have given my vision document, that is also you are not allowing me to publish. 22 hours video I have given to government of India, that copy is also with you. My copies are there everywhere. Fourth point, I have raised against the coronavirus and my video 2020 went up to UN. I told it is artificial virus. Same video in today you are not able to republish again. I don't know why there is restriction. I have also published Oppenheimer's great voice where he is just literally crying. You can watch his body language. He's talking about
1945, 6 August, soon after that he is reading Bhagavad Gita, bloods in my hand. That is also in partial you are blocking. I don't know, understand. You have blocked. I have talked against IPR patent kind of voice you are blocking, right? When I make some videos on many issues of, let's say, Abraham Lincoln, or for that matter, South African President Nelson Mandela, I told those voices cannot be blocked by anybody, for that matter, YouTube, Facebook, for that matter. This is totally wrong. You must enrich your knowledge and wisdom, and you must make sure some freedom has been restored. And last 2-3 days I was trying to make some videos on war crimes and who are heading those war crime list. That video I was about to publish, and that is not been able to upload it. I don't know what kind of software you are making and not allowing to publish. There are so much garbage things in this website and this Facebook, YouTube. You will find too many dirty things, but you are not allowing. Your Wikipedia is having all kind of information on war crimes, and they have made particular sites for the war crimes, who are the country, with detailed description. That is very interesting. So, will you ignore Wikipedia, or will you ignore Encyclopedia Britannica, or for that matter, History of Science? Okay, how many things are, it is there in the website, it is in the public domain, and if you are taking out some information and publishing some video, you are blocking. I have given my message to Mr. Putin. I am from India. Shanti, Gautam Buddha. But when I want to spread the message of Shanti, you have also problem. You have problem with Shanti Devi. Shanti Devi, you don't want peace, right? First, please make your house in order. First, make your house in order, then you'll understand. Everywhere is peace. I have talked about economic aggression. I have talked about nationalism. Those things are very essential in 21st century. 21st century, it is not the century of economic aggression, attacking some country, destroying small kids, bloodbath, everything. It is not good. Peace is very important. This 21st century is going through last 2 years, so much corona, so much Omicron, so much everything. I lost my parents, I raised my issues. I have given my opinion to government of India that this is what it is happening. One must need to know that how the virology research is going on across the globe. Like Atomic Energy Commission you have established in 1949-48, soon after Second World War. There is a need of similar kind of virology research organization, monitoring organization, you name it, anybody. I told also like Pollution Control Board 1962, 63, 64, 65, when you have established that Pollution Control Board, it is established in America, your N95, everything patenting, you made so much money, industrialization, many things had happened, but that time you didn't have any problem. This time globally there is not a single word on coronavirus, so many people died. I lost my parents. They are very healthy. I told this is an artificial virus created in a lab because I am a biologist.
I understand halka biology. That's why I told I read 100 years of history. I have analyzed First World War, Second World War, Gulf War, when Mr. Colin Powell, with everybody is demonstrating in UN, anthrax, Saddam Hussein, तेरे पास anthrax है, मेरे पास उसको proof है, अमेरिका. Britain also have joined. Tony Blair also joined. All the minds have joined and proved, convinced UN and got permission to attack Saddam Hussein regime. I have protested in that sense. What is there to protest? You know what you are going to do, you are going to do it. I have raised my voice as a common citizen of this mother earth. I have raised my voice and told those are wrong things. I told this economic aggression is a bad thing in 21st century. Each country, they have right to restore their democracy or the way they are maintaining and operating their citizens' welfare. You are nobody, but till you have so much love to restore democracy throughout the world. That's why you own all Asian countries, including Afghanistan, such a poor country. Many years, starting from Russia and Americans, all those blue Chinese eyes, everybody is watching. Afghanistan, silky road. But what is happening in Afghanistan? I raised my voice. You left them Anath, Murdo. You left them alone. They are starving now. I told them how many universities, how many colleges, how many parliament you have developed. It is developed by India. It is inaugurated by our Prime Minister. That is what it is. You can understand that part. You understand well. But you left them halfway. You told that you have spent close to so many trillions of dollars. It is just for your internal operational, but no money has been spent for the development welfare of the common people of Afghanistan. Same thing had happened to where Saddam Hussein's regime. You have taken him out and hanged him. Now what is going on in Iraq? All the oil field owners is not my uncle and aunties. It is not my uncle and aunties. Like in South Africa, all the gold mines, all the diamond mines, all the African countries' gold mines. My uncle and aunties are not there. Even I don't have $3 in my pocket. I publish everything free of cost. No problem. How much time you want to block me? Block. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। Rabindranath Tagore is very nice here, very nice. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো। If nobody is listening or hearing, একলা চলো, go alone, no problem. I love Rabindranath also in many ways. Mamo chitte nitte ke je nache tata thoi tata thoi. Even though I don't know Rabindra Sangeet, I don't know, but I know little word. हल्का ममो चित्ते. मन अच्छा होना चाहिए. मन खाली पेट पे भी अच्छा होना चाहिए. Same thing, Shukanto Bhattacharya.
अच्छे अच्छे पॉइंट है। ক্ষুধা রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। See what he's telling. He's telling Khuda, hunger. When there is a hunger, you see the moon is also like a burning chapati, burning chapati. But Mr. Putin is having ambition to go to moon, Sputnik, all those things he has done it long back. Many years back, even I was not born that time. God has not created me. God? Yes, God. It is not the God, maybe. Some undivine force, some natural force, biological system can create it. That time they have not created me. But today, Mr. Putin is invading Ukraine, his own brother. It is not good. I told it is not good at all. It is very bad. It is very, very bad, Mr. Putin. I told Mr. Putin must study or read history of science, technology, development, history of their own country, their uncle, grandfather, like Stalin, Mikhail Gorbachev, perestroika, everything they should study, but they are not studying at all. So much power, so much aggression, nothing, not listening anybody. NATO, European Union, nobody. G7, G8 countries, nothing. UN, nothing. I told in 1917, when the birth of Russia has taken place almost, it went up to 1985 with all those things, your Cold War, First World War, Second World War, everything, it went. Stalin has ruled, after Lenin, Stalin ruled close to 30 years. After that, all 10 years, 15 years innings like Gavaskar is playing for Indian cricket 20 years, Sachin another 20 years. Then Saurabh Dada and all. Okay, before that Saurabh Dada, after that Dhoni, now Virat Kohli, they are playing for many years. Similar way, okay, they have the capabilities to run the Indian team and their sporting skill, they have done it. But here, you made it a monopoly like in China, Russia, what is happening, monopoly. The leaders are very, very monopoly in nature nowadays. Like Fidel Castro, I told, 1960 to 2008. Can you imagine, one person is not living, but Fidel Castro is ruling Cuba for so many years. But everybody says communism is kind of an evolving thing. My good friends, my learned friends, they are professors, they are scientists, they are communists. What an intellectualism. My friends, they are into hibernation now. They are into hibernation now. They are not realizing. They are practicing theories. Whatever that suits them, they like it. But they don't allow to talk against Stalin. They don't allow to talk against North Korean president. They don't allow to talk against Chinese president. They don't allow to talk against Kerala. They don't allow to talk against Jyoti Basu. When you say Khati Basu, my so many communist friends, you are telling that why you are telling Khati Basu? He is fruitful Basu. They won't allow to talk about Chandan Dada, who is settling in London.
Well, friends, I have given my economic theory. I've given my 11 technologies, my own technologies in the simulation models in climate change research. I have given my first mathematical modeling of symbiotic system in nature. I am a toilet man, I am a garbage man, I am a kind of a totally migrant laborers and workers, no idea, nothing in front of Kunal Dada. Kunal Dada is very much capable, he knows everything, he does the surgery, he does open heart surgery, as you laws, you know the hearts and mind, he knows the history well. I told Kunal Dada, ek bar bulao, ek bar bulao, ek bar bulao. What had happened next station, what Kunal Dada has done recently, just 7 days back, there is one kind of a national debate. I told, what is this national debate? I called St. Xavier's College, the organizer. After 3 minutes, they kept phone down. I told, who is Dr. Kunal Sarkar? I referred 2020, his famous talk on the Bengalis who are living outside Bengal. They shouldn't be allowed to come inside Bengal. They are the migrant laborers and workers, he is telling. I told, who is Kunal Sarkar? What is the audacity? You are coming from Bangladesh, settling hospital, and you are talking against all nonsense things. You went to London in your own money. I also went to London, not once, not twice, thrice. I went to London University. I got the fellowship. Kunal Dada, you will be able to understand certain things. You are doing Koplar's job, Koplar. Not that Koplar. Dada, you are playing with the sentiment of 12-13 crores of Bengalis. You are trying to project yourself as a intellectual in Bengal, and you are representing Bengal without taking the consent of Bengalis. That is my problem. You are nobody. And when I post on your wall, you delete. What an audacity you have. I have posted close to 60-70 videos on the national debate just 7 days back. You have invited JNU, you have invited all kind of Congressive people to talk, who you are not at all knowing the history. You are calling and allowing them to speak. I told, what is the screening methodology, selection of people? When you say, I asked organizer, have you taken permission from government of India or broadcasting ministry or everybody for organizing this thing? You don't have any answer. You are deleting. You are such a coward, hypocrite, that you are deleting everything. This kind of deletion business is too bad, too dangerous. If you have anything to say, you can say, Dr. Kunal Sarkar, I don't delete any of the video or any message. I have published close to 200 videos on your wall and talking against you or against your dirty mind, I have told, but till you are not understanding, Dr. Kunal Sarkar, well. कुत्ते का भी दिन आएगा. Every dog is going to get their due. It's a time. I had given my vision document Bengal because I love Bengal. I love Didi. I have so many Didis, my own Didis, my neighbors Didi, my sisters. Not like Swami Vivekananda, all my brothers and sisters. Not all brothers and sisters, but some of them my brothers and sisters. Some my mother, some are uncle, aunties, auntie ka auntie. सब कुछ है. मेरा माताओं, बहनों, भाइयों को भाइयों. मेरा बहनों का बेटी क्या होता है, भांजी.
भाजी नहीं, भांजी। बट दीदी के लिए, दीदी कोई पेटेंट नहीं है, दीदी के ऊपर सब दीदी है, हमारा सब दीदी है। आई हैव सो मच रिस्पेक्ट। हम दीदी के लिए जीते हैं, दीदी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, हमारे बहुत सारे दीदी, हमारा पोएट्री लिखा है। जावेद अख्तर, मैं 16 साल में जो पोएट्री लिखा है वो पोएट्री आपको सुनाएंगे। इसके लिए मैं भी टोपी लेके आया हूँ जावेद जी, बट ये टोपी मैं पहनना नहीं चाहता हूँ जावेद जी। ये टोपी आप जैसे स्यूडो टोपी नहीं पहनना चाहता हूँ। मैं 16 साल से 22 साल तक कविता लिखे हैं, कविता लिखे है। हम खुद को पोएट नहीं बोलता है, जैसे आप खुद को पोएट बोल लेते हो। पब्लिक का ओपिनियन को आपको कोई घंटा फर्क पड़ता है। जैसे आप हिजाब के बारे में बोला है, आप हिजाब को सपोर्ट करते हो। मैं आपको बोला है जावेद जी, आपका किताब कोई नहीं पढ़ेगा, आप हिजाब को सपोर्ट करोगे। मैं साबना आंटी को भी बोला है, आप साबना आंटी को डायस में हिजाब पहना के क्यों नहीं लेके आते हो। आपको बेटा के बारे में भी बताया है, इट्स ए फ्री कंट्री, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं आपको शायरी भी पढ़ेंगे, कविता भी पढ़ेंगे। कितना मिनट हो गया? 26 मिनट कैसे चला गया समझ में नहीं आता है। सुबह सुबह टॉयलेट का अंदर में 26 मिनट, आह अच्छा है, शांति शांति। सुबह सुबह अभी 6, 6:30 भी नहीं भेजा, चारों तरफ अंधेरा है। अंधेरा अंधेरा मतलब सूरज देवता अभी तो जागृत नहीं हुआ है, जागृत नहीं हुआ है। तब भी यदि तोर डाक শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। মনোমোর মেঘের সঙ্গী উড়ে চলে যায় দিক দিগন্তে। মনোমোর মেঘের সঙ্গী। आई डोंट नो रविंद्रनाथ को एक दो गाना आता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आता है। रविंद्रनाथ हमारा दिल पे है, वो मानवतावादी है, मायावादी है। इसलिए मायावाद, ऑल मैमेलियन मायावाद है, ऑल मैमेलियन। मेरा बिल्ली भी मायावादी है, मेरा गाय भी मायावादी है, कुत्ते भी मायावादी है। मायावादी बहुत खराब चीज़ है। जितने मायावाद रहेगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेल्थ। जितने मायावादी है, देखो मायावाद is leading this world a very dangerous way. I told many times this war and everything what is happening, it is because of Mayabad. In Mayabad everything you feel, everything is yours. लोटा भी yours, कंबल भी yours, चादर भी yours। इसलिए मैंने पोएट्री लिखा था चादर। তোমাকে জড়িয়ে ধরবো বলে অসুখ করেছে আমার, তোমাকে জড়িয়ে धरबो बोले অসুখ করেছে আমার। चादर जैसे कंबल होता है, जैसे ऐसा जैकेट होता है ना, ऐसा जैकेट जैसे जावेद अख्तर जब शायरी पहनता है, ये जैकेट पहनता है। बहुत गर्मी है अभी, सुबह सुबह थोड़ा ठंडी है, ऐसे जैकेट पहन लेता है। ये जैकेट पहनने के बाद क्या होता है, जैकेट पहनने के बाद आपको को भी लगता है। आपको लगना चाहिए ना, आपको थोड़ा थोड़ा लगना चाहिए। जावेद जी हमारा देखो मेकअप मैन नहीं है, आई डोंट हैव एनी मेकअप मैन। हम रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। जैसे अभी कैसे लग रहा है, जैसे इसके बाद जावेद अख्तर क्या करते हैं, डायस पे आते हैं, टोपी लगा देता है। टोपी जावेद अख्तर ऐसा लगेगा, शायरी। तुम शायर हो तो मैं कुछ नहीं हूँ। मजाक कर रहा हूँ जावेद जी, आपका पोइट्री मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप कवि हो तो मैं आपका पाठक हूँ। पाठक वो पाठक नहीं है, हम पाठक, रीडर है, रीडर। आपको पोइट्री को मैं बहुत तरीक़ा से समझता, क्योंकि हम भी पोइट्री लिखा 16 साल में। आपका 16 साल का पोइट्री सुनाओ, हम भी सुनाएंगे। एक छोटा सा पोइट्री सुना के एक 35 मिनट का कहानी ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद हम बताएंगे जावेद जी
ओके, इसका पहले जो वार के बारे में बताया था, हमारा सब वीडियो हम रात में बनाता है, वार क्रिमिनल्स के ऊपर बनाता है, जिसके ऊपर सब बताया गया है। आज 200-300 साल में दुनिया में जब से वार क्रिमिनल्स आया है, कौन कौन क्या 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 कारनामा किया, उसको लिस्ट हमारे पास है। हम बोलना चाहता है, लेकिन हम तो बोल दिया है, लेकिन उसको पब्लिश नहीं करने देता है। कितना दुख होता है। हम डेमोक्रेसी का बात करता है, ओपन वॉइस का बात करता है, अब्राहम लिंकन का बात करता है, हमने विल्सन चर्चिल का बात करते हैं, सबका बात करते हैं, हमने साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट महात्मा गांधी का बात करते हैं, सब करता है, गौतम बुद्ध का बात करते हैं, क्या क्या बात करता है, लेकिन सच बोलने दे ही देता है। हमारे लिए जो सच है तो बोलने दो। सच बोला तो क्या है, प्यार किया तो डरना क्या, सच के साथ प्यार किया है, सच्चा प्यार है, सच के साथ है, लेकिन आप पब्लिश नहीं करने देते हो। ये क्या बात है फेसबुक, क्या पॉलिसी है बताओ। नहीं जावेद जी, आपके लिए है। आप हिजाब के बारे में बोला है ना, मेरा दिल धो गया, बहुत धो गया। अब इस उम्र में देखो, आपको हिजाब सपोर्ट करते हो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मेरा वीडियो पढ़ लो, मैंने आपको टैग किया, सावन आंटी को भी टैग किया है, मैंने पीएमओ को टैग किया है, मैंने शशि तरूर को टैग किया है, बरखा दत्त को टैग किया है, अर्नब गोस्वामी ने मेरा चैनल में उसको भारत रिपब्लिक भारत में पब्लिश किए है। अच्छी बात है। बट बरखा एंड बोरखा, हा, कितना वीडियो। आप कुछ दिन पहले वुमेन एंटरप्रेन्योर के ऊपर किया है, मैंने बोला कहाँ से सिलेक्ट किया है, वो भी नेशनल डिबेट बोलते हो। आपको नेशनल का मीनिंग पता है क्या? पहले तो देखो, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी करो। बरखा दत्त, we check out your previous act, what you have done, many issues. In the concept of national security, what you have done, many things, secret tape, many other things. I know NDTV well, Dr. and Mr. Ponoy Roy. Nowadays, Nidhi left and rejoined. I told that time, Nidhu, you must come back because she was selected as a professor. That is also a Hawks kind of thing. She was telling she was not doing. She was selected in what is Cambridge, Oxford, or MIT. Where? What is that university? Big university. Nidhi Ranjan, a journalist is getting professorship. That is also what a story. Nidhi, this is not fair. This is not fair at all. Now you are coming and joining this channel again, NDTV. It's a good thing. I know you speak good English, but you should maintain the content well. You should select good people. Not every time Chidambaram, what he knows about the economics. He knows only the pot is growing inside his balcony and he is returning file, and you know everything. Every time you bring this person, OSC and who else? I know everybody. And very good English, Shashi Tharoor, Nehruvian, good English, very good English. Sure, your wavelength is matching that place, right? One day you bring some question. If you don't allow, doesn't matter. I don't care. NDTV. I have unsubscribed. I told my all friends unsubscribe NDTV. Don't waste 10 rupees also per month. It's a wastage of time, energy, because your content is Bharkha Dutt has left. All those good journalists, they have left. Rajdeep Sardesai, Arnab Goswami, all left. They did not become leftists, they left. All they have left. You left, joined, right? But you don't have any options. Nidhi, you don't have any options, no new channel. All those fellows, they have left, they are now CEO of their own channel. Okay, they have the ambition, they have done it, no problem. This media business is nice, Koji family, all those things.
They're coming from the same Mendelian breeds. Who is Mendel here? The Pronora is like Mendel and all those people, right? They have learned now. Some are they are the good variety and some still under dwarfism. So it has to go to F1, F2, F3, F4 and whatever it may be. Okay, no problem. Very nice. This is already 35 minutes. I want to end up this video over here because this freedom. I'll come back about the war crimes and Javed Akhtar's Sairi and my poetry next video. Thank you very much. Bye bye. Halka. Bande Mataram. Bankim Chandra, you deserve more. You deserve more than Rabindranath, that much I have told. I have courage to tell. Everywhere I say, Shukanta Bhattacharya, you deserve more than anybody in terms of your age. That is also very important. At the age of 20, what you are writing, the content is very important. What you write at the age of 20 and what you write at the age of 70, it makes a lot of difference. तावा गरम है, अब गरम तावा में पोइट्री को सेक लिया, अच्छी तरीके से सेक लिया, खाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, बटर डाल के खाते हैं, ठंडा बटर गरम हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा। साथी 36 minutes साथी, no problem. Bye, take care, my fellow Indians, my brothers and sisters. Some of my closest friends, not all sisters, not all brothers. Thanda. Bande Mataram. Be nationalist, buy nationalistic thing, be Indian, buy Indian. Indianization is very important. Disi murgi, not the poultry murgi. Dishi murgi, expensive, but quality is good. Very nice quality. Once again, thank you very much. Every time I say thank you because this is not prepared food. Inside toilet, nobody is there. Nobody is listening my voice. So, how many times you say thank you doesn't matter at the end of the day. Thank you. Thank you like a PhD thesis. You are giving thank you to whom? I give thank you to my train, thank you to my boss, thank you to the computer, thank you to my guide, thank you to my parents who has given the light, sunlight, not the light boy, sunlight, and given to grow in this motherland, morning breakfast, lunch, dinner, everything is provided my father, my mother and everybody. That's why I could talk, I could speak, I could dance, I could write my PhD thesis, I could have my rational thinking, everything. So I must give thanks to my parents first because जैसे मुर्गी पहले है और अंडा पहले है, उसी का कहानी में आ रहा है. पहले बच्चा है और बच्चा का माँ एंड बाप है, तो वो है तो बच्चा का माँ बाप है तो वो कहाँ से आया? ओह बड़ा टफ डिबेट है, मुर्गी है क्या अंडा है, कोई नहीं बोल पाया. मुर्गी भी रोता है, अंडा भी रोता है, आम पहले है मुर्गी है. No, this is not done. Something at initial level there is a confusion, after that streamline. Like in Congress, what you have? Congress, you have now G22. I don't know what is G22. I know G7 and 8. G7 nations are there. Abhi G22 in Congress. Congress was in crisis. They are making G22. It's a Gandhi 22. Like chicken tandoori, chicken 65, chicken 70, chicken 420. C 420.
It is not C1, C2, C3 pathway of plants for doing photosynthesis. It is not that way. But it is not Bhatt. It is not Dr. Bhatt. It is Bhatt. So क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आया. What is happening over here is very interesting thing are happening. Things are these war crimes. The list is too long, and the people I told this world wealth is a kind of a fixed thing. Now, if you want to be richer, right? If you have, I told many times, right? Now, if you have 1000 ml of water, like if you have 5 people over here, if you want to be richer, right? You drink 700 ml. So means you are occupying 70% wealth. See, wealth and the things are there in the natural resources is fixed volume, natural resource. Okay, intellectual thing, something you are manufacturing from your idea, that is a different thing. But natural wealth like gold, mineral, oil, all kind of natural resources are fixed, and that time 700,000 years back, people used to move from one place to another place. Moving, चलो, कैसे चलो? लगन पिक्चर नहीं है, लगन पिक्चर नहीं है, लगन पिक्चर नहीं है। आमिर खान, क्या लगन पिक्चर है? ये गाना भी गाएंगे तो बोलेगा भाई ये गाना तुमने ले लिया 2 लाइन। नहीं, हम नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। हमारा टेगोर अच्छा है, यदि तोरे डाक सुने के ना आसे तबे एकला चलो रे, यदि तोरे डाक सुने के ना आसे तबे एकला चलो रे। कहीं भी डाल सकते हो ये गाना को, कहीं भी थक गया, चलो थोड़ा सा बैठ दो, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, इसके बाद फिर से बोलो यदि तोरे डाक सुने के ना आसे तबे एकला चलो रे। गांधी जी भी दांडी अभियान किया था ऐसा। वो अकेला चला गया था 1924 में बकरी के साथ लंदन में। 200-300 बकरी साथ में गया था। देखो, चेला भी गया था। बकरी को देखभाल करने के लिए भी इंसान चाहिए था। लंदन सिटी में देखो, मुंडन भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। वो मैंने बताया। साउथ अफ्रीका में ट्रेन से धक्कल भी दिया था, अकेला था, लेकिन कोई एविडेंस नहीं दे पाया। मैं बोला था एविडेंस दो, हम मानते हैं। 1924 में आपको नेकेड मैन बोला, आपने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला आपका अवार्ड हो। महात्मा गांधी, ऐसा नहीं होता है, आपका चेला लोग इतिहास जो लिखता है गलत लिखता है। मैंने बोला देखो, मैं टॉयलेट से कितना अच्छा बात कर रहा हूँ। टॉयलेट में ज़्यादा नॉलेज विजडम होता है, बिकॉज देयर इज ए रिलीजिंग पॉइंट। हमको सैलरी नहीं मिलता है। सैलरी मिलेगा तो क्या होता है, आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट मेंटेन करना पड़ता है। more salary is directly proportional to good history, favorable history। आपको समझ रहे हो? थापर दीदी, थापर आंटी, आपको सब कुछ मालूम है। हमको बताए JNU का साइंस कैसे होता है। BC त्रिपाठी, धन्यवाद। नमस्कार। मैं तेरा कौन हूँ? मैं तेरा, तुम बुद्धू हो तो मैं बुद्ध हूँ। तुम मार्क्स है तो मैं तुम्हारा हेगेल हूँ। तुम ऑनियन है तो मैं मिर्ची हूँ। मिर्ची नॉट रेडियो मिर्ची। जवाब दो। 15 दिन होने लगा, नोटिस भेजा है, जवाब दो। क्या बोलती बंद हो गया आपको? यू कैन पब्लिश पेपर इन अमेरिकन जर्नल फ्रॉम माई सिस्टम, बट यू कैन नॉट आंसर द सिस्टम व्हाट यू हैव used for 15 years, got European patent, got 19 PhD, you got vice chancellorship, you got readership. BC Tripathi, such a shameless fellow I have never seen at the age of 75. Such a shameless thing, vice chancellor, everybody is not replying.
That is a very, very dangerous thing. 15 days gone. My first notice will go. I'll publish in all national and international magazine or newspapers with photographs, with your publication and everything. I am a crusader everywhere, crusader. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे. B.C. Tripathi, Vice Chancellor JNU, Vice Chancellor Sarda University, Vice Chancellor Robinson University, Dean, Life Science Department, Registered, JNU. Please make a note. You must reply because it's not my money. It's save the science. If you are right, you say I'll bow down in front of government of India or my motherland. Or else if you have done mistake, please don't shame the science what we have developed for India. This is the country of good personalities, Satyan Bose, Meghna Saha, Jagadish Chandra Bose, and the same J.C. Bose award your B.C. Tripathi got. I will make sure this award has been taken over by government of India, Dr. B.C. Tripathi. You have underestimated me, undermined me, abused me in the campus. You had diplomatic immunity that time. Even Vice Chancellor has not replied to my email. My technology, same thing you are talking about Brookhaven National Laboratory. I have developed system for you. If my system was wrong, if system was not functional, how can you produce 10 to 11 PhD from JNU from my system? How can you get European patent from the system by cultivating rice and also maintaining 680 ppm? That time I told my system is working 700 ppm CO2, 750 ppm I have given. You told that time you want to have 1000 ppm. B.C. Tripathi, I told 1000 ppm is too much. In your IPCC also guidelines never ever talking about 1000 ppm enriching CO2 in open atmosphere. You told this is none of my business, but you called me to develop this system. When system development is over, when system was developed, when I asked money and it is based on the tender, I have every right to ask you money because I have not asked you additional money, but you have made an additional ring 5 lakhs rupees, 7.5 lakhs rupees. That money you have not given me. You told supposed to give me money. You have given only 50% money after many requests, after abuse. You have published so many good students. Very nice. I have talked to everybody. Some are retired now. They are surprised to hear. They told we don't know anything about a whole lot of things. One of the professor in a university, in a big university, when I talked 45 minutes, I had a discussion in many issues. Initially I talked about my own technology. He was very happy that this is possible. I told that I have a separation system without filtration. I can create a G value. I can separate your liquid solid separation. He told this is very nice. Then I talked about JNU. Sir, you have got a patent and a publication. He told yes. He told that this is my name is there, but my student, she was working, but I have incorporated my name over there. What is science going on? He is head of the department in a big university in India, topmost research institute in and around Delhi. Dr. B.C. Tripathi, still you are in hibernation. I understand frog that can go on hibernation. How many days? How much food they can store? Just for 3 months.
After that, frog must come out again to start the natural activities. Like कोरोना वायरस, कोरोना मान जाएगी, ओमिक्रॉन मान जाएगी, मैंने बताया है। ओमिक्रॉन को पटा लिया, कोरोना को भी पटा लिया, उसको क्या किया, फ्यूज कर दिया, फ्यूज। नाउ कोरोना इज अफेक्टिंग ह्यूमन, हाउ इट इज पॉसिबल? डार्विन को पता नहीं था वायरस क्या चीज़ है, तो चीज़ बड़ी है मस्त, वो भी मालूम नहीं था। वो गाना डार्विन नहीं सुना। आहा, ये तो आज का गाना है, ये गाना हम लिखते हैं। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, डार्विन डजंट नो व्हाट इज वायरस इज ऑल अबाउट। वायरस तो आया जब ने माइक्रोस्कोप आया, वो भी ज़्यादा दिन का बात नहीं है। वाटसन एंड क्रिक, प्रणाम वाटसन क्रिक। रोजलिना, नहीं, आपके लिए कुछ नहीं है। आप तो डीएनए डबल हेलिक्स का हेगेल हो, हेगेल। अगर वाटसन एंड क्रिक मार्क्स है, अब हेगेल हो, हेगेल। साइंस एंड पॉलिटिक्स एंड फिलोसॉफी all are same. Human need and greeds are same. बॉल देखा तो चौका मारा, धोनी जैसे 6 बॉल। अब कितना स्पिन करोगे? 1-2 बॉल तो लूज छोड़ोगे, उसको मारेंगे। 6 बॉल के अंदर में 2 छक्का मारेंगे। छक्का, वो छक्का नहीं है, ऐसा छक्का। धोनी को पता है छक्का क्या है, असली छक्का क्या है, नकली छक्का क्या है। इतना मारता है सामने वाला को बाथरूम गीला हो जाता है। इतना गीला होता है, धोनी ने दिखा दिया। I have so much respect. He is much more younger than me probably, but I like Mr. Dhoni. धनी है, धनी is money, धनी is rich. धोनी, महेंद्र सिंह, all good things. महेंद्र सिंह धोनी। देखो, किसी का नाम तीनों चीज अच्छा नहीं होता है। देखो, महेंद्र सिंह धोनी को देखो, महेंद्र सिंह धोनी, एक भी शब्द का मीनिंग जो है गलत नहीं है, बराबर परफेक्ट डिक्शनरी से उठा के कोई ना कोई लिखे है। आई रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, probably they have given good names, but my teacher's name is दुखो निवारण। That is too bad. दुखो निवारण, you have sorrow and another is निवारण, how to come out from sorrow. ऐसा नाम कभी नहीं होता है। एक ही नाम का अंदर में दुख भी होता है, निवारण होता है। He is my English teacher. We used to write Shakespeare, Wordsworth. All the world is a stage, all men and women mere players, that there exist an entrance. Dukho Babu, he used to teach this thing at the age of 5th standard. He used to say, all the world is a stage. Yes, all the world is a stage. All men and women prayers, yes. They have their exist an entrance. It's true, very much true. But his name is Dukkha Nivaran. If you have sorrow, then the same name Nivaran. आप दुखी भी हो जाओगे तो दुख निवारण के पास जाओगे। आप निवारण चाहते हो, दुख निवारण के पास ही जाओगे। My pradam, I don't know whether Dukkha Nivaran Babu is still alive or not, I don't know, but I am sure he will be around. How much? Around 75 years old? Very much possible he is alive, I don't know, I am not in touch. It's very much true. So friends, I have been speaking close to how many minutes? 54 minutes. It is not till there is dark everywhere. So
what is happening in Russia. I told this Russia, what is happening is too bad is happening. Mr. Putin has accumulated the world wealth. He bought literally the owner of entire Russia, Moscow city, and is a trillionaire. Once you have money, I told you, if you want to check the democracy of any country, you go to any mohalla. It is not the mohalla clinic. You go to any mohalla, you see the dogs who are roaming around. You check out their sound. You see some houses, how much dogs are like, shouting. The more they shout, you will find that owners are very, very powerful. The more dogs means, more shout means their owners are more powerful. So, dogs shout or dogs barking is directly proportional to the wealth of their owner. कुत्ता भी भूखता है, तब पता चलता है उसको ओनर के पास कितना वेल्थ है, बिकॉज वो भूखता है क्यों? ओनर ने उसको चिकन मटन खिलाता है, इसके लिए कुत्ता भी उतना ही भूखता है। भोगने वाला बहुत है। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में आप देख दो, करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम सब इकट्ठा हो जाता है, भोगता है, सब इकट्ठा होता है, ABCDEF, forget about the ideology, but when they talk about something, किसी का अगेंस्ट में लड़ना है, सब इकट्ठा हो जाओ। जैसे अच्छे स्टूडेंट के अगेंस्ट में, इफ यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, नो हाउ टू काउंटर, लेट्स से you have 32 students in your class. If you are very brilliant, then all 31 students will be against you. They will be giving exam, and the total marks of 31 students to be calculated against you. Till you are beating them, how hard you try. God is great. I am talking about the wisdom of Mr. Narendra Modi, my Prime Minister of India. He is not my relative, not uncle, but I respect him. कितना लड़ाई हुआ है, यूपी में हुआ है, गोवा में हुआ है, मीडिया ने कितना मोदी के अगेंस्ट में बोला है, बोला दीदी जीत जाएगी। मैं बोला दीदी का जमानत चला जाएगा। अभी देखो सब महुआ दीदी आ रहा है, सेकंड क्लास में ट्रेन में धुकू करके कलकत्ता आ रहा है, बट कोई नहीं दिखाया महुआ दीदी फ्लाइट पे आया, किस में आया है। मैं सोचा ट्रेन में आया शायद, क्योंकि पैसा नहीं है, जब्त हो गया। लेकिन सब बोल रहा था गोवा में दीदी सरकार आएगा, दीदी का पद्म फूल फूटेगा। मैं बोला उधर सॉइल वाटर कंडीशन सैलिनिटी ज़्यादा है, उसमें पद्म नहीं होता है, पद्म लक्ष्मी नहीं होता है, मेराइन एल्गी होता है, घास फूल भी नहीं होता है। मैंने गोवा में 4 साल था, आई नो एवरीथिंग ओवर देयर। I met Nitish Rane, all these Rane family, Chogle, Salgaonkar, all those people. I worked for their mining industry. I used to go, I was small, halka, but I know them. I have seen in Vasco da Gama, when the iron ore is exporting to other countries, this is the only state. The iron ore and minerals, everything is owned by the private companies. I thought 1964 में, India में, सरकार के अंडर में, it was government undertaking everything. Now they have given on lease to Goa, because Goa got freedom in 1960, like that is not in 1947, that is, am I right or wrong? Because before that, it is all the hibernation, Portuguese. Hey Portuguese, the way Rabindranath told, Shah, Hun, Dal, Pathan, Mughal, Lag, Dehe, Mogoli. But he has not mentioned the Portuguese over here. He has forgotten. He has mentioned Shah, Hun, Dal, Pathan, Mughal, Ag, Dehe, Hululin. But he has exactly told the kind of looters, and the looters coming to India and merging, they are becoming part of the civilization. I told, what a hypocrisy by Rabindranath. He has told all those things. Even Mughals, okay, many Mughals came, no problem. But Shah, Hun, Dal, Pathan, Mughal,
Shokund, all Pathan, they all looters, Mahmud and all, they came, looted, went back. The way he's telling British, is one place he's telling British. I don't know how many British Rabindranath has seen living in India nowadays. Have you seen anybody, British fellow? They went taking all the things with the nice thing to British family. They have deposited there. Now they are living and enjoying. And also, after many years, 70, 75 years, they are now taking our scammers. They are taking our cricketers also. Munty bhai, Munty. Well, it is their right. If they are taking British citizenship, they are playing for their country, no problem. Similarly, South Africa, many Indians, they play. Arabian country, many cricket team Indians are playing. They are settling, no problem. मेरे बाप को क्या जाता है? नहीं जाता है. मेरा देश को कुछ नहीं जाता है. चले जाओ, एक मंटी चला गया, एक फंटी चले गए तो क्या हो गया? एक सुंदर चला गया तो क्या हो गया? अमेरिका में क्या हो गया? IIT खाली नहीं हो जाता है. Till you have scope to develop, IIT can produce better than Sundar Pichai, better than all kind of different institute. We have Narayan Murthy, Narayan, Om प्रेम जी, ओम टाटा जी. मैं तो बोलता हूँ ओम शांति, ओम सुधा मूर्ति, ओम नारायण, ओम प्रेम जी, ओम टाटा जी. देखो टाटा जी बैचलर है. सुधा आंटी, I like you. Narayan Kaka, I like you. No problem, you are nationalist. Bidla, Goenka, Dalmia, I also like you. No problem. People should respect those companies. देखो, they are bringing also धर्म. आप मंदिर बनाओ, बिरला टेम्पल में चले जाओ, अच्छे गाना सुनो. ओम शांति 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 शांति. बट टाटा को देखो, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑल टाटा. जमशेदजी टाटा, एयर इंडिया. अभी देखो 1948-49 में जब गवर्नमेंट ने टाटा को प्राइवेट से गवर्नमेंट करवा लिया था, इसके बाद उसके ऊपर कितना झाड़ू लाठी मारा, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ. इतना नुकसान, 40-50 हजार करोड़ का नुकसान, इतना बोझा कौन उठाएगा? सरकार ने थक गया, कांग्रेसी लोग थक गया. लेकिन फिर आ गया टाटा के पास. Vistara, Tata, Ratan Tata, I salute you. You deserve more. You deserve Nobel Prize. Nobel Prize is nothing in front of you. You deserve best special prize from India. People should salute Mr. Ratan Tata. Special award for him. One must bring the special parliament session to respect Mr. Ratan Tata, his contribution to Tata family. He is a Parsi fellow now coming to India. He is also from a Persian point of view. He is Bahiragato, Persian. Bahiragato, Ratan Tata. लेकिन कोई नहीं बोलता है आपको. लेकिन बंगाल गवर्नमेंट सबको बोलता है बहिरागत. मैं बोलता हूँ सुभाष बोस बहिरागत, विवेकानंद बहिरागत, ऋषि अरविंदो बहिरागत. क्या बात करते हो दीदी? उसका नीचे तुम्हारा फोटो. गलत सलत मत करो दीदी, हम भी बहिरागत है. आपने बोल दिया, लेकिन बंगाल में इतना ज़्यादा जमीन है ना, हम उसमें खेती करेंगे, अच्छे हाइड्रोफोनिक एरोफोनिक करेंगे, अच्छे साइंस टेक्नोलॉजी लाएंगे, अच्छा सोनार बांग्ला. ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ীর বিশ্ব মায়ের আঁচল পাতা.
अच्छा से गाता हूँ, अच्छा से, अच्छा सिला का नहीं है, अच्छा सिला तेरे प्यार ठोक दिया क्या बेटे, नहीं ऐसा नहीं गाना गाना है। हम ऐसा गाना थू 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 ऐसा गाना नहीं करते हैं। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বময়ী, বিশ্বমায়ে আঁচল পাতা, ও আমার দেশের মাটি। सुर, सुर क्या होता है? हम तानसेन नहीं है, हम तानसेन नहीं है, हम बाथरूम सिंगर है, ऐसे गा देते हैं। তোমার পরে ঠেকাই মাথা, শান্তি শান্তি, বন্দে মাতরম। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে চলো। कितना दूर जाओगे? चलो चलो। देखो माओ से तुम भी एकला चले थे, कार्ल मार्क्स भी एकला चले थे, साथ पे कोई नहीं था। लेकिन महात्मा गांधी एकला नहीं चला था, पूरा गांधी फैमिली साथ पे चले थे, उसको सरनेम दिए थे, तो फैमिली का काउंटिंग ज़्यादा हो गया ना। अब देखो महात्मा गांधी खुद का बच्चे गांधी है, सरनेम खुद का दिया है, वो भी जोड़ गया। देखो इसको बोलता है डबल एक्शन फर्टिलाइजर, ठंडी ठंडी तेल। चलाक है, बहुत चलाक है गांधी जी। मैंने सब टाइम में बताता हूँ गांधी जी कितना चलाक है। देखो कस्तूरबा गांधी कितना लाकी है, देखो खुद का इतने सारे है, इसके बाद गांधी जी सरनेम दे रहा है। नेहरू फैमिली का बेटिया को, बेटिया का आहा, पर्शियन मुस्लिम को भी दिया, शादी करवाया, देखो कितना बच्चा हुआ। आहा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, आहा, करण एंड अर्जुन, करण एंड अर्जुन, करण कौन है अर्जुन कौन है पता नहीं है। सोनिया गांधी, मेनका गांधी, देखो देखो कैसे ट्री हो रहा है, ट्री ट्री ट्री, फॉल्स ट्री कैसे होता है, देखो आहा, शांति शांति शांति। सोनिया गांधी, आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ so-called Indian National Congress after death of Rajiv Gandhi, longest. Even Subhash Bose could not serve for 1 year. Many cannot serve, but you are the longest serving president of Indian National Congress. History will be rewritten, but Rahul Gandhi and Rahul Gandhi's sister प्रियंका गांधी, प्रियंका भरदा, भरदा नहीं चाहिए हमको, गांधी चाहिए, भरदा नहीं चाहिए, गांधी चाहिए, वही स्टाइल चाहिए। हम वोट देने वाला हो, वोट जरूर देंगे, बट देयर आर so much question. In opposite, Rajiv Gandhi, he was bomb blast, murdered. It's very sad. I know. I take human angle. Like it's not good thing. Killing somebody is not a good thing. I have not supported somebody has killed Mahatma Gandhi. It's not a good thing. I have told. Well, somebody is telling some ideology they have killed, but ideology cannot be translated towards an individual murdering. It's not the American criminal war. There is a special site is there, the crimes done by the American establishment, their authorized people. They will never ever be questioned, and their torture, the history of torture, American civilization. Actually the Americans, they are the British
Basically, they settled in America. The way Sundar Pichai and all those people have settled in America, and they all work for the American interest that I have told you. If you take 200 years history, everything like First World War, Second World War, all those wars, Persian, everything, all war, and all British, Americans, Russian, and Chinese hand present day everywhere. The economy is revolving around few countries right over here. Somewhere people talk about the Europe, German, French and all. Yes, they are also partially, that is in the 16th, 17th century, there is no problem. In present day, they have changed their mind. Germans, they are not attacking anybody. French, they are not attacking anybody. And the British, they are very much shrewd. They are not part of the European Rest Union. They are their own, their bloods are blue. If you want to go to Europe, you have separate passport for Britain and rest, which means the rest world versus the Britain. But if you see the British economy, they have made their own rules for themselves. Like Americans, they have made their own democracy for themselves. They don't listen to other democracy. They believe in Dadagiri. Dadagiri. Dada? It is not the Dada Saheb Phalke. Not Phalke Dada Saheb. Aha. Friends, I am referring all those things from very big sites in this website. Are there the crimes, American crimes, those crimes, list of the leader, list of the person, their protection, everything is mentioned. Let's say any soldier is fighting like any place, like if they murder and massacre everything, you cannot take the international forum and put a case against him. That also American had made sure that international bodies cannot prosecute them. Even the American, if the America, they do it, and it goes up to the President of America to pardon. They're the war heroes and heroines, not heroines. But if you see in America, the gun culture is so much. Millions of people die on gun culture. There is nothing absolutely. This is American hypocrisy and similar way Russian hypocrisy, Chinese hypocrisy, how their economic aggression is going on. In last news in Sri Lanka, I have visited Sri Lanka, Maldives, how Chinese people are putting and dumping things, making roads. Now after few days you will see this entire Sri Lanka will be under the belt of China. China, मैना कथा कहो चुपकी मेरे रहो. मैना कथा कहो तुम्ही चुपकी मेरे रहो. वो हमार मैना रे, मैना, China and मैना, खाचार पोषा मैना, তুমি বলো বলো সত্য সেলুকাস বিচিত্র 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 বীর্জনী বিচিত্র এ দেশ. No problem, shanti. Same thing in China, what they are doing in Pakistan, all the port and all, they made a separate city for themselves. देखो कम्युनिस्ट, मेरा कम्युनिस्ट दोस्त, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारा बोलते क्यों बंद है? तुम प्रोफेसर हो, प्रोफेसर होने के बाद, रिटायर होने के बाद भी आप चुप बैठोगे? कितने सारे आदमी तो रिटायर करने के बाद कुछ तो बोलता है. क्या मरने के बाद बोलोगे? कब बोलोगे? खाली नेहरू नेहरू नेहरू. अरे चाचा, नेहरू क्या है? पका हुआ चीज है, बताओ. 13 बार नोबेल प्राइज के लिए अप्लाई करता है, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है. नोबेल प्राइज नहीं मिलता है. एवरी ईयर नोबेल प्राइज के लिए अप्लाई करता है तुम्हारा नेहरू चाचा. पंडित भी पंडित नहीं है, फेंकू पंडित है. जैसे अभी पंडित लोग को किसने तड़ाया, भगाया, बताओ. समझने का कोशिश करो, समझने वाला समझ जाता है.
समझने वाला समझ जाता है, नहीं समझने वाला कभी नहीं समझता है। और जावेद अख्तर को कितना भी समझाओ समझेगा नहीं है। जैसे जैसे हमारे जो जर्नलिस्ट लोग हैं, क्या नाम है इसको, क्या नागासाकी साकी अवार्ड मिला, नागासाकी नहीं वो अवार्ड जैसे अरविंद केजरीवाल को भी मिले थे। रवीश कुमार, रवीश तुम्हारा इतना जलन क्यों है, तुम्हारा जलन क्यों है, तुमको नहीं दिखता है क्या? हिंदू लोग को जब भगाया था वैली से, जब 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 पटेल जी था उस टाइम हिंदू था सब, इसके बाद कैसे रातों में सब मुसलमान हो गया, इसके बाद 1990 में भगाना भी चालू हो गया। आपको शर्म नहीं आता क्या रवीश कुमार? तुमको तो इंग्लिश बोलना आता ही नहीं है, 4 लाइन इंग्लिश बोलो आपको पादलुम गीला हो जाता है, इतना तो बोल सकता हो। आपको कौन अवार्ड देता है? आपको हिंदी कौन सा ट्रांसलेशन करके अवार्ड देता है पता नहीं है, मेगासाकी और क्या है नागासाकी है, हमको समझ में नहीं आता है। रवीश कुमार, बी लिटिल नेशनलिस्ट, बी ह्यूमनिस्टिक। आई हैव क्रिटिसाइज्ड रविंद्रनाथ। आपको तो इतिहास पता भी नहीं है, आप मायावादी बात करते रहते, एक ही बात को 50 बार घुमाते रहते हो। आपको चैनल को मैंने अनसब्सक्राइब करवा दिया, आपका फालतू 3rd क्लास बातें हमें अच्छा नहीं लगता है, सच्ची बताता हूँ। अब डिबेट करना चाहते हो आओ, कौन सा टॉपिक में डिबेट करना है हम बात करते हैं। बात करता है रवीश कुमार, आपका बॉस से भी बात करेंगे, पनोरा से भी बात करेंगे। पनोरा को बोलो बात करने के लिए, वो बुलाएगा नहीं, बिकॉज दाल में कुछ काला है, हमको पता है। 2 सवाल करेंगे उसके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। जैसे आमिर लोग कभी कभी गरीबी को सेवा करता है, क्यों दिखाता है हम गरीब के लिए कितना करता है जैसे हमारा फिल्मी वर्ल्ड में भी बहुत सारा सेवा करता है, लेकिन कार ठोक देता है, सब कुछ करवा देता है, दिखाता है हम कितना ह्यूमनिस्टिक है। सिमिलर है तुम्हारा पनोरा भी ऐसा ही करते रहता है टीवी चैनल में, सब कुछ समझ में आता है हमको, चंदा कलेक्शन करते रहता है। आपके पास खुद के पास जितना पैसा है ना जमा, उल्टा पैसा देश के लिए दान करो, आपने कम से कम 100 स्कूल एस्टेब्लिश कर पे पाओगे, फ्री में कर पाओगे। गो एंड डिक्लेयर इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो प्रॉब्लम। I think government of India must declare something to voluntarily declare how much black money you can surrender, you give some discount. Some scheme they should start, and they should not take any action against them. You can check out how many people can come and voluntarily surrender. जैसे फूलन देवी आए थे, मालूम है फूलन देवी, चंबाल का डाकू फूलन देवी, हमने बचपन में पढ़ते थे फूलन देवी। But I have a lot of respect for Phulan Devi. She surrendered her gun. From Chambal to Parliament she went. But sad part is she was killed inside Delhi by her own friends, enemy, very closest one that I don't know, but it is not good. She has reformed herself. Muhammad, same way. Give a chance to people to reform, that is important. Friends, I've been speaking for 1 hour 17 minutes. I don't like to speak more. I want to speak only one poetry, that जावेद अख्तर. I know जावेद अख्तर. जावेद जी बहुत बोलते हैं, हम मानते हैं, आपका शायरी हम सुनते हैं, इतना ही बोल के ख़त्म करता हूँ। मेरा कोई प्रिपेयर स्पीच नहीं था, जावेद जी का एक शायरी सुनता हूँ। मैं 16 साल का, मैं 16 साल, जावेद जी सुनो मेरी बात। जावेद जी आप 16 साल में क्या करते थे पता नहीं, बट 16 साल में हम भी स्कूल जाते थे, हम गांव में पेड़ के नीचे खेलते थे, कभी धूप कहीं छाया, कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी कौवा का टट्टी सर के ऊपर हमारा भी गिरते थे, खाली पैर में हम घूमते थे। जावेद जी हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास माँ था, हमारे पास पिताजी था, हमारे पास भाई था, बहन था, हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, कुछ नहीं था, पैसा भी नहीं था, बट खुश था। हमारे पास रविंद्रनाथ था, हमारे पास सुकांत था, हमारे पास नजरुल था, लेकिन आपका शायरी नहीं था। हम
हम आपका शायरी को केयर नहीं करते हैं, बॉलीवुड वाला करते हैं, छोड़ दीजिए। आप रविंद्रनाथ का तो 1% भी नहीं हो, सुकांत का तो 0.0% भी नहीं हो, काजी नजरुल का 0.01% भी नहीं हो। आप जैसे 2 लाइन का पोइट्री लिखने वाला को हम कभी नहीं केयर करते, सच्ची बताता हूँ। बट when society give you lot of respect and every news channel आपका बात सुनने के लिए तड़पाते रहता है, कवि सम्मेलन में आपको बुलाता है, तो सुनना पड़ता है ना। मजबूरी में बड़ा पाव जब खिलाता है इंसान को, हम खा लेते हैं, भूख लगा तो खा लेता है। Anyway, I don't like to waste time. I want to recite जावेद अख्तर कुछ शेर सुनाता हूँ। एक शेर है, कभी जो ख्वाब था हो पा, कभी जो ख्वाब था वो पढ़ लिया है, मगर जो खो गया वही वो चीज क्या है। I don't know, I know little Hindi. It is written in English. I am trying to read out again. कभी जो ख्याब था वो पढ़ लिया है, मगर जो खो गया वो भी चीज क्या थी। पता नहीं चीज बड़ी है कि मस्त क्या है, पता नहीं है, ये गाना हमको समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे, मैं समझा जो है, जो खो गया वो पढ़ लिया था, मगर जो खो गया वो भी चीज क्या थी। मतलब आप कोई भी चीज को भूल नहीं पाते हो जावेद जी, इसीलिए याद दिलाता है पीछे। हम ऐसे कभी याद नहीं करता है, हम मेटेरियलिस्टिक है। आपको मैं सुनाता हूँ मेरा पोएट्री। दूसरा पोएट्री क्या है, जिधर जाते हैं सब जाना उधार, क्या क्या लिखते रहता है। डर हमको भी लगता है रास्ता के सामने से, लेकिन एक सफ़र पर ऐ दिल अब जाना तो होगा। आह, क्या शायरी में क्या होता है। आप देखो, किसी का भी शायरी पढ़ लो, 1-2 लाइन उधर से उड़ा दो, पुराना वाला शायरी। शायद बहुत सारा शायर है जो हमको पता है, उसका भी शायरी एक ही जैसे लगता है। जैसे आम का स्वाद, मुगल पीरियड का आम, आज का आम वही स्वाद लगता है, लगता नहीं है। आम कौन सा मुगल पीरियड का आम खा रहा है का आज का काम आम खा रहा है। अच्छे अच्छे शायर देखो, ये जो है, मैं यही लाइन कर, डर हमको भी लगता है रास्ते का सामने से, लेकिन एक सफ़र पर ऐ दिल आप जानता तो होगा। आह, क्या बात है, क्या बात है। ये सब रिश्ता के लिए बात है। हम रिश्ता उस्ता का बात नहीं करता। हम रिश्ता क्या बताओ, 16 साल में क्या रिश्ता है। हमारा बाप है, माँ है, भाई है, बहनें, घर है, रास्ता है। रिश्ता क्या है हमको समझ में नहीं आता था। जावेद दादा, आप तो बहुत रिश्ते की बात करते हो, रिश्ता नया नया रिश्ता बनाते हो। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। अब रिश्ता जिंदगी गुरु 80 साल में रिश्ता बनाओ, अमृत सेन जैसे बनाओ, हर एक जगह में जाके बनाओ रिश्ता। शांति निकेतन में जैसे बनाया था, बंगाल में बनाया था, लंदन में बनाया, अमेरिका में बनाया, 3 रिश्ता बनाया, अभिजीत जैसे बनाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है।
लेकिन 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 जब देश का बात होता है तब हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपका पोइट्री जो है, जो शायरी जो है, पुराना जो शायर है, सबसे मिलते जुलते हैं। खाली एक दो शब्द का हेर फेर है। क्या क्या शायर है, जो शायर बहुत अच्छा शायर है। मिर्जा गालिब, सुने हैं मिर्जा गालिब। गालिब, आप जावेद जी को जानते हो? आप कैसे जानोगे? नहीं जानोगे, नहीं जानोगे, बट जावेद जी आपको जानते हैं। जावेद जी, किताब खोल के दिखा सकता हूँ बहुत सारी चीज जावेद जी। हम भी लिटरेचर पढ़ते हैं जावेद जी। समझने वाला समझ जाते हैं, समझने वाला समझ जाते हैं, नहीं समझने वाला जिंदगी भर नहीं समझता है जावेद जी। जावेद जी, नमस्कार। Okay, friends, let me recite my poetry. I've been speaking for a long time. I told I used to follow something, what you call it, communist philosophy I used to follow. I have written two poetry books, and two poetry books. One is Raat Ko Uthare Gaan, another is Silpir Choke Ghumne. These two poetry book contains close to 155 poetries. So friends, I am going to recite one poetry. I don't know where I have written. One poetry is talking about, it's a love poetry. It's a different kind of love. It's a political love. I'm not getting this poetry. I might be taking 1 or 2 minutes to find out this poetry. Right, I don't know where it is, where this poetry went. Well, where is poetry? Prem. It is in the first poetry book or second poetry book. Let me search it. So I'm not good in searching. Okay, let me prem. Prem means dushomoy prem. Gota bistriti puja bishoy prem. Well. Where is this my poetry went? And frame. Okay, this is one more poetry. My memory I'm losing, right? Okay, prem. Yes, this is first poetry I have written. Okay, let me search out this poetry. I'm so sorry that, yes, it is in the first poetry. I'm my memory is, so when I talk about Javed Akhtar, some sense of understanding, it goes, evaporates very fast. Okay, let me recite this poetry. Prem is a love poetry, and love towards the political establishment is the communism, Karl Marx communism, and one fellow is attached to the love of Prem. And this one more character is there. What is that character? Roma. Roma is a character. It is a kind of a political ideology is Roma. So I'm giving some introduction. Prem. বাংলাতে বলছি, বাংলাতে, এটা বাংলা কবিতা। দিস ইজ রিটেন ইন বাংলা। পাতি বাংলা। পাতি বাংলা না, নট পাতি বাংলা। পাতি বাংলা এই কারণেই, কারণ রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল গীতাঞ্জলি ইংরেজিতে লিখে, বাংলাতে পায়নি। তো আমি তো পাতি বাংলাই বলবো না, এটা পাতি বাংলা। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেলে বাংলাতে পেলে ভালো করতো, আমি সেটাই বলেছিলাম। এনিওয়ে, আমার যেটা বলার, 18 বছর বয়স, प्रेम। 18 ईयर्स में आप पॉलिटिकल चीज़ में आप प्रेम में आ जाते हो। लेट मी रिसाइट दिस पोएट्री। एट द एज ऑफ 18 I am writing this poetry, and it was published at the age of 22, first poetry book, when I was MSc student. I am a science student, I am not an art student. I was awarded from university. Okay, this award has got no meaning, it's a meaningless thing, but till for me it's meaningful. প্রেম, 18 বছর বয়স, রমার সাথে প্রথম দেখা। অনেকটা প্যাংলার মতো চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। একটা প্রজাপতি উড়ে এসে বসলো রমার মাথায়।
18 বছর বয়স, রমার সাথে প্রথম দেখা। অনেকটা প্যাংলার মতো চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। একটা প্রজাপতি উড়ে এসে বসলো রমার মাথায়। বলেই ফেললাম, সত্যি বলছি রমা, আজ বিয়ের কথাটা পাকা করলে কেমন হয়? 18 বছর বয়সে এত স্পষ্ট কথা বলতে আমার মতো বিশ্বপ্রেমিকের জুড়ি মেলা ভার। রমা বলেই ফেলল, ছেলেটার মাথাটা গেছে। রমা একটা ফাউন্টেন পেন হাতে দিয়ে বলে, এই শুভময়, তুমি আমার লাল গোলাপ, যা খুশি লেখো। রমা একটা ফাউন্টেন পেন হাতে দিয়ে বলে, এই শুভময়, তুমি আমার লাল গোলাপ, যা খুশি লেখো। 7 বছর পর বাস স্টপে দেখা। 7 বছর পর বাস স্টপে দেখা। চোখের চশমা। রমা অরিন্দম দত্তের বউ। কপালে রক্তিম সিঁদুরের টিপ যেন চৈত্রের দাবদাহকে বাড়িয়েছে শতগুণ। কেমন আছো? রমা আলাপ করিয়ে দেয় 4 বছরের এক রত্তি ছেলের সাথে। প্রথম দেখায় মামু বলে ওঠে, মামু। রমা আলাপ করিয়ে দেয় 4 বছরের এক রত্তি ছেলের সাথে। প্রথম দেখায় মামু বলে ওঠে। মনে মনে বললাম, ভালোবাসার কপালে আগুন। মনে মনে বললাম, ভালোবাসার কপালে আগুন। ভেস্তে গেলেই সব প্রেমিকরাই প্রেমিকার সন্তানের কাছে মামা হয়ে যায়। আহা, মনে মনে বললাম, ভালোবাসার কপালে আগুন। ভেস্তে গেলে সব প্রেমিকরাই প্রেমিকার সন্তানের কাছে মামা হয়ে যায়। বিদায় নিলেম ভাগ্নের গালে চুমু খেয়ে। বিদায় নিলেম ভাগ্নের গালে চুমু খেয়ে। 22 বছরের শুভময় সেন। যারা বলেছিল শুভময় দেশপ্রেমের কবিতা লেখ, গণতন্ত্রের জয়গান গা, রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকানে কারা যেন বলেছিল সিগারেটের শেষ টানটা মার গুরু। এখন একটা বিপ্লবের কবিতা হয়ে যাক। দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলাম, একটা পুরো সিগারেট চাই। সস্তায় কিস্তিমাত করার দিন চলে গেছে। তারপর সিগারেটের ধোঁয়ায় বিপ্লবের বন্যা এসেছে। গণতন্ত্রের মহোৎসব করছি, ধনতন্ত্রের পিণ্ডি চটকেছি। সেই শুভময় সেন এখনো এক চপ্পলের, এক মুখওয়ালা দাড়ির। বয়সের পাল্লাটা ভারী হয়েছে মাত্র। শুভময় এখনো ছেলের কাছে বিড়ি চায়। বলে ফেলে, মাইরি বলছি, শেষ টানটা আমায় দিস রে খোকা। চুলে যে পাক ধরেছে ভুলে গেছে শুভময় সেন। সমাজতন্ত্রের লোডশেডিংয়ে যারা মোমবাতি জ্বালিয়ে মশা তাড়াচ্ছে, তাদের হাত ধরে বলেছি, মাইরি দাদা, আমার বিড়িটায় একটু দাও না ধরিয়ে, দেশলাই কেনার পয়সা নেই। সমাজতন্ত্রের লোডশেডিংয়ে যারা মোমবাতি জ্বালিয়ে মশা তাড়াচ্ছে, তাদের হাত ধরে বলেছি, মাইরি দাদা, আমার বিড়িটা একটু দাও না ধরিয়ে, দেশলাই কেনার পয়সা নেই। মোমবাতির আলোয় যারা চিনতে পারে বলে ওঠে, কি শুভময় দা। মোমবাতির আলোয়
যারা চিনতে পারে বলে ওঠে কি শুভময়দা, এই ফাঁকে একটা গণতন্ত্রের কবিতা দাও না শুনিয়ে। যারা সস্তায় পলিটিক্স করার জন্য আমায় ডেকেছিল ডায়াসে, বলেছিল চলে আয় শুভময়, তোর মতো ভালো ছেলে চাকরি করে পয়সা পাবি, পলিটিক্স কর পলিটিক্স। একটা ডায়াসে গরম গরম কবিতা শুনিয়ে দিলেই বাজিমাত। একটা ডায়াসে গরম গরম কবিতা শুনিয়ে দিলেই বাজিমাত। 5 বছরের গ্যারেন্টি মার্কা লাইফ, দেখবি তোর পেছনে ছুটছে পেয়াদা, আইএস, কন্টেসা, আরো কত কি। সত্যি বলছি ওখানে আমার অ্যালার্জি, সত্যি বলছি ওখানে আমার অ্যালার্জি। প্রেমিকার চোখে যেদিন থেকে বাসি ফুল হয়ে গেছে, সেদিন থেকে বুকের ব্যথাটা বেড়েছে বহুগুণ। 7 সাগরের নোনা জল ঘাঁটতে ঘাঁটতে শিরায় পড়েছে টান। আজ রাতে স্বপ্নে রমা বলে উঠে শুভময়দা, তোমার মুখে চোলাই মদের গন্ধ। ভাগ্নে বলে উঠে মামা একটা বিপ্লবের কবিতা দাও না লিখে। ভাগ্নে বলে উঠে মামা একটা বিপ্লবের কবিতা দাও না লিখে। আজ ভোরে রমার দেওয়া ফাউন্টেন পেনটা খাটা পায়খানায় তলায় ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, আজকাল কালির আঁচড়ের আমার বড্ড বেশি অরুচি। হাতে ফোসকা বার্নল কেনার পয়সা নেই। আজ রাতে স্বপ্নে রমা বলে ওঠে শুভময়দা, তোমার মুখে চোলাই মদের গন্ধ। ভাগ্নে বলে উঠে মামা একটা বিপ্লবের কবিতা দাও না লিখে। আজ ভোরে রমার দেওয়া ফাউন্টেন পেনটা খাটা পায়খানার তলায় ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, আজকাল কালির আঁচড়ে আমার বড্ড বেশি অরুচি। হাতে ফুসকা বার্নল কেনার পয়সা নেই। Shanti, 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 Shanti. Thank you very much. This is one poetry I have written at the age of 18 and 19. I was first year BSc student. This was published at the age of 21. When I was first year MSc student, and this is one of the toughest poetry probably I have written in my life. And as I've told you, this is a love poetry, political love, and coming out from this political love, and this is the story probably can each Bengalis, especially who are affiliated to communist, having little sense, because I was involved with communist movement, and when I was in love with this politics and done little work, and I felt and realized that it is too bad to be part of any political system. I have tried to come out from the system, and this is some character I have made. Roma is a political entity. You are with love with this thing, and you can see the consequences of everything is written in this poetry is a much more lengthier way, very clear way, and same philosophy is also
is coming into the political system at that time. You are very much, your left government is there in Bengal. I could see all those things was happening. Still, I was objecting. Even we are in power, I was objecting to that. It's like I was a strong critic and I had a lot of arguments. I was writing with Ganasukti and all, like, my poetry was being published in many occasions. I met a lot of poets that time. I told many times that I met Sunil Gangopadhyay, Shakti Chattopadhyay, Joy Goswami, this Subodh Sarkar. That time he doesn't know how to write poetry. He was in the same university. Okay, no problem. But this poetry can be analyzed in a very critical way, that at the age of 18, 19, the kind of poetry I used to write, I never say that मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है पोइट्री लिख के. मैंने बताता हूँ मैं पोइट नहीं हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ. आपको अगर अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगेगा. अच्छा, it is something like that. I have tried to explain each and everything. I have tried to explain that how this Dhanatantra and this bourgeois system can be demolished, and what is our wisdom, and what is the fate of an individual. And a true communist is never able to occupy the position if you are true towards the philosophy. It's a very hard thing that is been explained at the end of this thing, and the Rama is getting married to another fellow. It is something like that. Your philosophy, you are switching over to different philosophy or no philosophy, because I have not continued any politics after that. I thought this is not a thing probably you want to continue, but till this love, like a Rama gave a pain to me, it is like the philosophy, and at the latter stage you are throwing into dustbin, khata paikhana, like Indian paikhana, Indian toilet, throwing it this pain, and you are telling that I don't like to write any poetry. I have not written a single poetry after my MSc. Single poetry. Last 30 years I have not written a single poetry. 28 years, not written a single poetry, except last election. कोरोना मान जाएगी, एक ही पोएट्री लिखा है, कोरोना मान जाएगी. This is on coronavirus. तुम्हें किछु करो ना, no, don't do anything. मेरा दीदी है, सब कुछ देख लेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे. आप कितना टाइम बोल दिया? 1 hour 41 to 42 minutes. It's too long to talk. This is not good. तुम्हें किच्छु करो ना. केजरीवाल दादा भी बोलता है तुम किच्छु करो ना. इलेक्शन भी जीत रहा है, दीदी भी जीत गया, तुम किच्छु करो ना. Don't do anything. Friends, I'm keeping this phone, and now this poetry, I'm going to recite my all poetry. This poetry, if I review, any Bengali person probably can tell you much better way how this communism is given us poverty in one way, and how it is tempting for somebody to get into politics to make your own ambition. That is also is talking about. But if you are true and honest towards the ideology of communism, you will be nowhere. You have to be manipulative kind of things, otherwise you stand, if you are very strict principally, this is not going to work. But the people who have manipulated, they have reached up to certain level. That is also I have talked about more things. But this Subhamoy fellow is very much tortured, like he has strong philosophy towards this communism, and his fate also has leading to a very kind of a difficult situation. He doesn't have money to have bidi. Cigarette is totally different, but bidi is asking bidi from his own friends and relatives. Give little money. This is what it is, friends. Communism is God has own skeleton, and other side is who is leading it is very rich. They are having all Havana churut, like Fidel Castro, like Jyoti Bose, like in Bengal many leaders, Chigna leaders. Chikna Chameli. I am not
not naming. Friends, I want to end this story probably. This is 1 hour 44 minutes. I don't like to extend this video. Okay, I have a poetry in front of me, Subhash Babu, Niren Babu. Okay, this is also a leftist poetry. I want to finish this with this poetry. Subhash Mukhopadhyay and Nirendranath Chakraborty, two poets from Bengal. They are very nice. I have written this poetry at the age of 21. Let me recite till it was here. Because I don't have any readily available things written in Bangla. Subhash Babu, Niren Babuke. I am just, imagine 19 years boy is writing to Subhash Mukhopadhyay and Nirendranath Chakraborty. Subhash Babu, তোমার পাতা বেঞ্চে আজ ভোরে এক ঝাঁক পায়রা এসে বসেছে, ওদের গম দেবে না, না হলে দুমুঠো চালের কণা। সুভাষ বাবু, তোমার মরা গাছে প্রাণ এসেছে, এ বসন্তে ফুল দেবে বোধহয়, ওদের আশীর্বাদ করবে না। নীরেন বাবু, তোমার কলকাতার যিশু আজ অনেক বড় হয়েছে, অলিতে গলিতে ফুটপাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনো জঞ্জাল থেকে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমায় আর স্টেট বাসের জানালায় মুখ রাখতে হবে না, তোমার মুখের সামনে দুহাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে উলঙ্গ যিশু, পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুঁজছো খুচরো পয়সা, পাবে কোত্থেকে বাড়িতে যে পাঁচটা যিশু। নীরেন বাবু, তোমার যিশু আজ লক্ষ বীজ পুঁতেছে, তোমার সাধের বাগানে লক্ষ যিশু ভোর না হতে লাইন দিয়েছে মিছিলে, জ্যাম করে দিয়েছে রাস্তাঘাট, সবাই তাকিয়ে আছে। এসো নীরেন বাবু, লাইনে সামিল হই, আমরাও আছি সাথী। সুভাষ বাবু পিছু পিছু হাঁটছেন। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। This is 46 minutes, right? Very nice and interesting. I'm going to recite one more poetry, that is Kontak Haven. This is an interesting poetry on American aggression. Let me recite this poetry. I told you this previous poetry, Subhash Babu, Niren Babu, they are all communist and I like their poetry, and Subhash Mukhopadhyay is the man behind giving a second life of his literature of Shukanta Bhattacharya. This much I can tell you. Now this another poetry, Kontak Haven, is a political poetry, American aggression that time. ওয়াশিংটনের রাজপথে কলা চপা পড়ে থাকতে দেখে বিদেশি সাংবাদিক চমকে উঠেছিলেন। পেপারের হেডলাইন হয়ে উঠেছিল কলা চপা, দেশটা তো এমন ছিল না, তবুও জর্জ বুশের টনক নড়েনি। কলকাতার রাস্তায় মরা মানুষ পড়ে থাকতে দেখে বিদেশি সাংবাদিক কাছে গিয়ে নিয়েছিল স্ন্যাপ, পার্স থেকে একটা টাকা ছুঁড়ে দেওয়ার সময় পা পিছলে পড়ে যান, কারণ ওই ওয়াশিংটনের হেডলাইন। বিদেশি সাংবাদিক স্বদেশে ফিরে পত্রিকায় ছাপেন কলা চপা আর রক্তমাখা মৃতদেহের ছবি। কলকাতার সাংবাদিক কম যান না, হার্ট অ্যাটাক বলে চালিয়ে যান, কলার কথাটাই গৌণ। কলকাতার পথে কলার চপা। একটু আগেই এসপ্ল্যানেড স্টেজ শিলাবৃষ্টি হয়ে গেছে, মৃতদেহ সরানো হয়েছে, মুছে গেছে রক্তের দাগ। পোস্টমর্টমে রিপোর্ট বলছে আঘাতের দাগ, আততায়ীর হাত, খুন।
কি সব আজে বাজে বলছেন মশাই? আরও কিছুদিন পর গর্বাচবের বাথরুম, আর কিছুদিন পর গর্বাচপের বাথরুম থেকে পড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে লিখেছিলেন কলাচপা। শ্যাওলার কথাটাই ভুল করে বলা হয়নি। গর্বাচবের বাথরুম থেকে পড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে লিখেছিলেন কলাচপা। শ্যাওলার কথাটা ভুল করে বলা হয়নি। টনক নড়ল গতকাল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শোবার ঘরে পা পিছলে পড়ে যান। মেয়র সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে কলাচপা সাফাইয়ের অভিযানে সামিল হওয়ার জন্য জানান আহ্বান। যদিও কলাচপা মৃত্যুর কারণ ছিল না, আসল রহস্যটাই ধরে ফেলেছিলেন, তাই পদত্যাগ আগে থেকেই ছিল শ্রেয়। মেয়র সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে কলাচপা সাফাইয়ের অভিযানে সামিল হওয়ায় জানান আহ্বান। যদিও কলাচপা মৃত্যুর কারণ ছিল না, আসল রহস্যটাই ধরে ফেলেছিলেন, তাই পদত্যাগ আগে থেকেই ছিল শ্রেয়। Friends, this is a poetry related to American aggression and also falling out of Russia, Gorbachev, 1985 to 1991, that time, the turbulence zone, it is talking about that one. This poetry was written at the age of 21. It's a big, long poetry. I wish Mr. Javed Akhtar, you are listening your love poetry. जावेद अख्तर जी, सुबोध सरकार जी, हल्का हल्का हमारा भी थोड़ा पोइट्री पढ़ो। हम लोग एक साथ ट्रेन में आते थे। सुबोध सरकार, आप प्रोफेसर थे, हम छोटा वाला स्टूडेंट थे, पुरिया, बट आप आज बड़े हो गए। कभी कभी तो पढ़ो, मत पढ़ो। कौन बोला है पढ़ने के लिए? No, I am not telling you to read poetry. I am telling you, my friends, whoever is finding little content is there in my poetry, let them understand, because I am not telling, it's a very serious poetry on American aggression, American journalism and all those things. It has been written clearly how they enforce their idea to write certain things. That is what I was talking about. The Russia and splitting Russia, that is also the work culture destroyed, perestroika, everything, how they destroyed Russia. The 1917 Russia has been destroyed in 1985 to 91. How gradually things have taken place now. In present day, you can understand this poetry 30 years back written. Friends, I don't like to speak a single line. Namaste. Namaste, my India. Namaste. Santi, Santi, Santi. I want peace. My simple message to Mr. Putin in one line. You please surrender. Please surrender. No more war. This is what I am telling Mr. Putin. 24th century, nobody wants to have war. If you are getting into this thing, your everything will be stopped, because your country is not, you are not doing photosynthesis. You are dependent on many thesis and hypothesis. So many countries are involved to grow your economy. Try to understand. A plant can survive alone, just water and little minerals, little sunlight, little oxygen, little carbon dioxide, halka, but you cannot. God is great. So God, you have done a nice thing that we don't do photosynthesis. God, oh my God, I don't believe in God, but in nature has created human being.
except photosynthesis. अच्छा गॉड है तुम अच्छा गॉड है और अच्छा नेचर है. नेचर का विजडम देखो. Balancing act. I told this is an part of equilibrium. Friends, I am finding it now, closing it 1 hour 54 minutes. I don't like to make it 2 hours video like a film. It is not a 3 hours film. I have finished it. Okay, thank you very much. Bye bye. I'll go to office. I will have tea. I will have breakfast. I'll go to office. I'll work. No problem. This is night exercise, like cats and wild animals exercise their knowledge and wisdom during night time. Same way I do as a human being, exercise little by my knowledge, because daytime I have to have my office, so I have to earn little bit, some work I have to do, otherwise I am not doing photosynthesis. I am not an economist. I am not an invader. So if I don't work, from where money will come? I am not a broker. I am not a middleman. I am not a political leader. So I have to work to get $10 per day. And that is my earning. I give 8 hours, I earn $10, which is in Indian currency 500 rupees. Please, not 500, it is little more. $10 is equivalent to 800 rupees. ब्लैक पे बेचेंगे तो 850 रुपीज हो जाएगा. ब्रोकर वाला मान जाएगा. No, I don't want that part. I want everything in GST, no problem. Thank you very much, my dear friends, my dear 142 crores Indian plus minus all my mother Indians or my rest Indians, rest Mother Earth, my brothers and sisters, everybody, my uncle and aunties, my Putin uncle, American president uncle, another uncle, Joe Biden uncle, Donald Trump uncle, Santi. Thank you very much. Good morning to everybody. Bye. Bye, my Indian friends. Bye, Gautam Buddha. You are with me. Why should I say bye? No. I bought you, I fixed you, but I salute you every time. बुद्धम शरणम गच्छामि. हम जाएंगे, नेपाल जाएंगे, आपका गांव देखेंगे, लुम्बिनी देखेंगे, नालंदा गया, सब जगह में गया, बट नेपाल गया लेकिन लुम्बिनी नहीं गया. हम जाएंगे एक दिन जरूर जाएंगे. हमारा दोस्त है, माय डियर फ्रेंड्स. भाई कहाँ हो भाई? आ जाओ. Anyway, thank you very much. Bye, take care. Bye. No problem. Now it's very hot. Javed ji, this is for you. Javed ji. हम टोपी नहीं पहनता है, हम टोपी पहनाता है. Thank you very much, Javed ji. Bye, Javed ji. And all my good friends. This is a nice cap, but it's not for me. Thank you very much. Bye. Take care.